Okay, so now we'll start. आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूपीएससी की। ओके, पहली चीज तो ये कि हर चीज आप पढ़ नहीं सकते यूपीएससी में, बहुत ही वास्ट है। आपको कम से कम नहीं तो सिलेबस का मोर देन 50 to 60% बस कवर करना है, पढ़ लेना है। एंड यू नीड टू अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपको ये जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक के बारे में पता हो, अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको लगे कि ये मैंने सुना है, शायद इस चीज से रिलेटेड है। एंड प्लस आपका आर्ट, ओके, अवेयरनेस प्लस आर्ट इज इक्वल्स टू आंसर। यही यूपीएससी का मेन फॉर्मूला है, अवेयरनेस प्लस आर्ट इज इक्वल्स टू आंसर। ओके, ये चीज आपको बहुत जरूरी है पता होना। ओके, क्योंकि हर चीज आप पढ़ नहीं पाएंगे। मेंस में आप कितना भी पढ़ के चले जाएं, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, 4 to 5 इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। और वहां इसीलिए मेंस में मोस्ट ऑफ द सभी का ज्यादातर कितना नंबर होता है, 90 to 110 के बीच में। ओके, एंड दैट इज व्हाई आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। आंसर राइटिंग इसीलिए आर्ट बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, एंड द गुड न्यूज इज दैट एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, ओके, दैट कैन बी लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब इस आर्ट के लिए चाहिए क्या? एक तो आर्ट के लिए, इस आंसर राइटिंग के लिए एफर्ट चाहिए, दूसरा विल होना चाहिए। दो चीजें बहुत जरूरी है। ओके, ये याद रखिएगा, इट टेक्स विल एंड एफर्ट। रेगुलर प्रैक्टिस एंड प्लस गाइडेंस। इतनी चीजें आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। एफर्ट, विल, रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए आंसर राइटिंग की। मतलब एक भी दिन आप जैसे न्यूज़पेपर नहीं छोड़ सकते, वैसे ही आप आंसर राइटिंग कम से कम 2 क्वेश्चंस लिखिए। ओके, ये याद रखिएगा। एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर टू प्रोवाइड यू द हेल्प विद द गाइडेंस पार्ट। ओके, आई विल गिव यू द गाइडेंस। ओके, and I hope you successfully integrate the tips, okay, that we are going to provide you in your preparation. Okay, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस, ये याद रखिएगा। So the answer writing session is divided and the answer basic answer writing की मैं बात कर रहा हूं। The answer writing का जो basic outlook होता है वो 3 चीजों में डिवाइड होता है। Okay, 3 things। तीन चीजों में डिवीजन होता है आंसर राइटिंग का, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड। ओके, ये 3 चीजों में आंसर राइटिंग की जो फ्रेमवर्क है वो डिवीजन होता है इसका। ओके, एंड एज द नेम ऑलरेडी सजेस्ट फॉर द सेक्शन हेडिंग्स। ओके, सो each and every aspirant, all of you, okay, should proceed step by step, understanding each section completely before proceeding the next section. Okay, and ultimately you should be able to use the tips from all the sections in your answer writing in a holistic manner. तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट, these 3 things are very important. Okay, now first I will discuss what are the basics. Basics,
अब बेसिक्स क्या है आंसर राइटिंग के? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक्स. ओके, so this basic section of answer writing, it tackles the bare minimum requirements which needed for effective answer writing. Okay, that means the answer that you are going to write has to be effective in order to earn an advantage over the competition. Okay, and to write an effective answers, there are certain basic tricks that you need to know, and these tricks I will discuss now. Okay, so first of all, I will tell you do's and don'ts. Do's and don'ts. Okay, पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा आपसे पूछता हूं, दैट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कंप्लीटली, कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आप गलती सही पहली चीज वहीं पे करते हो, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है. So first thing is, do understand the question fully and correctly before contemplating an answer for it. Okay, so question in the mains examinations, they comes with certain directives. In the mains examination, the questions comes with certain directives. Okay, like discuss. Okay, critically. Okay, etc. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, and in this sense you should be able to grasp clearly what that particular directive is asking you to do. Okay, and then you should consult. Okay, you should consult on various directives and their meanings for a proper appreciation of what the examiner is expecting from you in the answer, कि examiner आपसे क्या आंसर में चाहता है. And this is also the most basic and yet a very important skill that you should have for an effective answer writing. ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्वेश्चन को समझना. मान लीजिए आपसे पूछा गया है इल्यूसिडेट द वैल्यूज ऑफ गांधी इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. आपने उठा के लिख दिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह, ये सारी चीजें, बट द कीवर्ड हियर इज इल्यूसिडेट, वो आपने नहीं समझा, तो दिक्कत वहीं पे आती है आपके आंसर की. इसीलिए लोग नंबर पाते नहीं है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली, आपको पता नहीं होता है. Okay, and then after this step, okay, do develop a basic mental framework of the answer before actually committing anything to the paper. And this is a very crucial skill that you need to develop on a war footing. Why? Because it should be that moment that you have read and understood a given question, and you immediately start forming the structure for the answer in your mind. And this step, ये step आपके अंदर कैसे आएगा? With practice. Okay, with practice it becomes easier and easier to do this. Okay, and if required, note down with a pencil whatever you remember. Okay, and when you remember it, all these things note down कर लीजिए. वही एग्जामिनेशन में पेंसिल से अपने बुलेट पॉइंट्स लिख लो, ताकि एक रफली फ्रेमवर्क बन जाएगा. फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है हर आंसर का. ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज समटाइम्स we tend to forget, or we simply are unable to recall from the memory at a very last minute in an examination or while writing the answers. Okay, and which can drastically affect the quality of our answer. तो ये दूसरा स्टेप बहुत जरूरी है. दूसरा बेसिक चीज यही है कि अगर आपने मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसका फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बन गया, आप वहीं पे तुरंत एक क्वेश्चन पेपर पे ही रफ वर्क मिलता है, वहीं पे नोट डाउन करके लिख लो. दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग नहीं करते हैं, और आप उन क्वेश्चन में घुस जाओगे जो आपको नहीं आते हैं, तो इससे आपको जो क्वेश्चंस आते होंगे वो भी आपके गलत होंगे. तो ये चीज याद रखिएगा. दैट मीन्स डोंट वेट फॉर द आंसर टू कम टू यू, इंस्टेड फोर्स इट आउट.
ओके, आंसर आपके पास नहीं आएगा, आपको फोर्स माइंड पे जोर डालना पड़ेगा। एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न हाउ टू फोर्स एन आंसर आउट ऑफ यू, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग वेरी हार्ड टू अचीव, ओके। And think of it in this way itself, that you are a serious aspirant and you have prepared considerably for the mains examination, and as a result you are in the possession of considerable amount of information, facts, ideas, okay. So if time were not an issue, okay, you could contemplate generously before each and every sentence you write, but within a given period of time, within a given time, ओके, आपको 7 to 9 मिनट्स के अंदर आंसर पूरा करना है, ये याद रखिएगा, ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सपोज यू कैन रिकॉल ओनली 2 पॉइंट्स फॉर एन आंसर एंड यू नीड टू थिंक, ओके, at least 4 to 5 points for a complete answer. In such a case you should not waste time trying to recall all the points before attempting to answer. Instead, force yourself to write the answers with whatever information that you have got, okay, and in that way, without wasting time, you give your best and shot to the question. This is another trick, another basic thing. टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में 2 पॉइंट्स हैं तो आप उन 2 पॉइंट्स पे फोकस करिए, अपने माइंड को फोर्स करिए और वहां पे अपने प्रेजेंटेशन स्किल को दिखाइए, ओके। And another thing in your mains answer writing is, don't overstretch your imagination, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एस्पिरेंट समझते ही नहीं है। डोंट ओवरस्ट्रेच, ओके, व्हाई? बिकॉज यूपीएससी रिक्वायर्स दैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन गिवन इशू and that the same should be readily understandable when it expressed, okay. So one should not slip into thoughts, ideas or arguments that are not absolutely necessary for writing a particular answer, okay. So over broadening and philosophizing, it may lead to confusion, okay, and as such it should be left out of mains answer writing. और आप वहीं पे एलिमिनेट हो जाते हो जब आप ज्यादा फिलोसोफाइज करने लगते हो, आंसर को ज्यादा सोचने लगते हो। बिल्कुल सिंपल वे में टू द पॉइंट लिखो, वही इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचिए कि अच्छा एफडीआई से इससे ये भी होता है, नहीं, टू द पॉइंट बस लिखना है, ओके। एंड दैट इज व्हाई दिस कैन सेव योर टाइम आल्सो and effort also, and that can be used in answering other questions efficiently. So don't stretch your imagination, okay. तीसरी चीज ये हमेशा याद रखिएगा, ओके। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर, ओके, हाउ टू स्ट्रक्चर। Now, how to structure your answer? So in this there are some steps. First step, okay, अब फर्स्ट स्टेप क्या है, ओके, तो पहली चीज, फिटिंग इंट्रोडक्शन टू योर आंसर, फिटिंग इंट्रोडक्शन टू योर आंसर, ओके। नाउ पहला स्टेप यही होता है इंट्रोडक्शन लिखने का, एंड दिस इंट्रोडक्शन शुड नॉट ओनली इंट्रोड्यूस द टॉपिक और इशू और आइडिया टू द एग्जामिनर, बट दिस इंट्रोडक्शन briefly narrate the central premise of your answer, okay. So if the question has 2 or more parts, then all parts must be introduced briefly. मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स को आपको इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करना है। पहली चीज समझ में आ गई आप सभी को? यस सर। ओके, कि क्वेश्चंस में जितने पार्ट्स हैं उन सभी को आपको इंट्रोड्यूस करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन?
Yes, sir. Okay. Yes, So sir. you have to introduce. Okay. So if the question has 2 or more parts, then all part must be introduced briefly. And the introduction should not be lengthier than 20% of the word limit at any cost. ये इंट्रोडक्शन मान लीजिए आपका 150 वर्ड्स का आंसर है, तो 150 वर्ड्स के 20% से ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। समझ में आया कितना इंट्रोडक्शन लिखना है? Is that clear to you all? Yes, sir. 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 20% आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है। दैट मीन्स आप इंपॉर्टेंट चीजें बस लिख दो। अगर 2-3 पार्ट है, एक एक लाइन का लिख दो। दैट मीन्स आपको 30 वर्ड्स में एनी हाउ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये याद रखिएगा। ओके, that means if the question is having 200 words, then in that case 20 to 40 words is what you should be looking at for the introduction, and same for the conclusion. जितना बड़ा आप इंट्रोडक्शन लिखें उतना ही बड़ा कंक्लूजन लिखें, दोनों का वर्ड लिमिट सेम होगा। समझ में आया इतना? So 20% conclusion also. 20% सेम। Okay. समझ में आया सौरभ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the second step. हेलो दिलराज, समझ में आया? सर, अगर कंक्लूजन ना लिखे वे फॉरवर्ड लिखेंगे तो उस पे तो मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखना पड़ेगा ना? दिलराज, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर कंक्लूजन ना लिख के वे फॉरवर्ड लिखेंगे तो उस पे तो मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, तो शायद 20% से ज्यादा नहीं हो जाएगा। हाँ, वे फॉरवर्ड आपका ज्यादा हो जाएगा, बट वे फॉरवर्ड हर क्वेश्चन में आपको नहीं लिखना है। ओके, वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि किसमें वे फॉरवर्ड होना चाहिए। अभी मैं कीवर्ड्स में बताऊंगा आपको। ओके सर। ओके, या नाउ द सेकंड स्टेप। ओके, second step. Okay, step 2. Now the body of the answer. Okay, that means divide the main body of the answers into paragraphs or bullet points as required by the question. That means each paragraph or bullet should have one point only, unless it is very necessary to do otherwise. And the most important points, okay, or the points that you have recalled fully should go first. जो आपको पहले आया है, याद आया, वो पहले लिखिए। ओके, एंड व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू डिस्कस, जब भी क्वेश्चंस आपसे पूछे डिस्कस करने को, ओके, whenever you are asked to discuss both positive and negative aspect of an issue, लिखने पड़ेंगे आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एन इशू। ओके, एंड यू कैन ईदर लिस्ट ऑल द पॉजिटिव्स इन वन पैराग्राफ एंड देन लिस्ट द नेगेटिव्स, ओके, इन अदर पैराग्राफ, और यू कैन डू वन मोर थिंग। ओके, यू कैन लिस्ट द नेगेटिव्स और यू कैन गो फॉर पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन इन ईच पैराग्राफ। ओके, ये याद रखिएगा। एंड जब भी कम पॉइंट्स हो, जब भी आपके पास आंसर लिखने के कम पॉइंट हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉम्बिनेशन इन ईच पैराग्राफ। उससे क्या होगा, आपका आंसर भरेगा थोड़ा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, एंड 3 पैराग्राफ फॉर 200 वर्ड्स, इट विल लुक बेस्ट। 3 पैराग्राफ बहुत है आपके 200 वर्ड्स आंसर के लिए, क्योंकि आपको स्पेस ही उतना मिलेगा कॉपी में, मेंस में। ओके, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ये चीज?
Sir, 3 paragraph means intro, body and conclusion ना? क्या चीज? Sir, आपने 3 paragraph जो है intro, body and conclusion का बात बोला ना sir? नो 200 नो, words. सिर्फ बॉडी का बोला है। 3 paragraphs. 3 पैराग्राफ। ओके, 3 पैराग्राफ। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes. ओके, Yes sir. ये याद रखिएगा। एंड देन द लास्ट स्टेप, ओके, स्टेप थर्ड, लास्ट स्टेप इज योर बैलेंस्ड कंक्लूजन। Okay, so last step, wrap your answer with a well balanced conclusion. Why? Because you can balance your conclusion with a healthy positive opinion, and the opinion does not necessarily have to be original, okay, but ideally and mostly has to be a positive one. So never end on a negative note or negative tone in your mains answer writing. You must be able to see the silver lining in the clouds, okay, and also never end the conclusion by posing another question. Conclusion में कभी आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि आप दूसरा उस पे क्वेश्चन पूछ रहे हो। No, if you want to pose a question as a part of your answer, do so in the mains answer writing body only, not in the conclusion, okay, and also avoid ending your answer in a rhetoric manner. Instead, try to put forward a solution or a way forward within a prescribed word limit, and this shows a positive bent of mind and a willingness to find solution, okay. So these things that any civil services aspirant should possess, okay. तो कभी भी कंक्लूजन लिखिए, आप बैलेंस लिखिए, कभी भी आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ओके, हमेशा कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन दीजिए जितनी भी चीजें आपने डिस्कस की है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है उससे रिलेटेड तो आप बॉडी में लिखिए, बॉडी में। सो अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स। समझ में आया आप सभी को? Yes sir. दिलराज? Yes, sir. हाँ सर। समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके, तो वे फॉरवर्ड लिखना है, आप लिखिए, बट अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करिए कि आप 4 to 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखेंगे सोल्यूशन की। समझ में आ रहा है दिलराज? हाँ सर, मतलब मैं ये पॉइंट रख रहा था कि अगर पॉइंट्स में लिखेंगे वे फॉरवर्ड में, जैसे अगर मैंने क्वेश्चन क्रिटिकली एनालाइज कर दिया ऊपर, तो उसका सजेशन अगर देने जाऊंगा नहीं, अगर आप पॉइंट्स में वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो बुलेट पॉइंट्स का यूज करिए। हाँ सर, उसमें भी मैं 3-4 पॉइंट्स लिख के छोड़ दूंगा मतलब। हाँ, बस 3-4, मैक्सिमम 3 लिखिए, इनफ है। ओके सर। हाँ ओके, तो इतना आप सभी लोगों को समझ में आया कि आंसर अब स्ट्रक्चर कैसे करना है? Yes sir. ओके, तो अब मैं आपको दूसरा सर। लिंक भेज रहा हूं, 5 मिनट के बाद आप लोग उसे ज्वाइन करिए, ओके। तो आप सब लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। मैं आप सभी को भेज रहा हूं।